In today's session, we will discuss about some kind of special functions and classes and pointers like friend function, friend class, and this pointer. So these are the content of today's lecture. First one is the friend function, then the properties of friend function. Next one is the friend classes, and last one is the use of this pointer. So we have to cover all these three topics in today's session. We try to cover them with examples. In very starting, first we need to discuss about the friend function. Before we have to discuss the friend function, we need to know the meaning of the word friend. What is the friend? Anyone can explain about friend? है ना? A friend can access anything from us, है ना? वो हमारी हर चीज को एक्सेस कर सकता है. Even our notes, our bike, or anything you have, you have to share with your friend, है ना? हम सब कुछ शेयर करते हैं जो भी हमारे पास होता है ना? जस्ट दैट इज ए फ्रेंड, है ना? रियल लाइफ में भी हम ऐसा ही करते हैं अगर सच्चा फ्रेंड है तो. अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंफर्ट टू शेयर एनीथिंग विद एनी फ्रेंड, देन इट इज नॉट ए ट्रू फ्रेंडशिप. सही है ना? इट इज राइट. Yes, sir. यस यस यस. अगर हम हमारे सच्ची फ्रेंडशिप है, देन वी हैव टू ट्रस्ट टू ईच अदर, है ना? और हम सब कुछ उस ट्रस्ट के बेस पे हम सब कुछ शेयर करते हैं. इवन हम हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी हमारी फैमिली में होता है वो तक भी हम शेयर करते हैं एक अच्छे मित्र के साथ. और खुद की प्रॉब्लम्स तो हम शेयर करते ही करते हैं ऑब्वियसली. सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द फ्रेंड. यू हैव टू शेयर एनीथिंग दैट यू हैव. ओके, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ अगर आप शेयर कर सकते हो, देन दैट विल बी द ट्रू फ्रेंड. यहां भी फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही है. इस फंक्शन के लिए कुछ भी प्राइवेट नहीं है. इट कैन एक्सेस एवरीथिंग. ओके, सो दैट विल बी द फ्रेंड फंक्शन. सो वी नीड टू डिस्कस दिस. We already discussed about the concept of encapsulation. Encapsulation. What is encapsulation? It is used for the data hiding. It means we can say the best example of encapsulation is the class. Class is a we can say pure example of the encapsulation because of we have to use the class for the data hiding. क्या क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को जो क्लास का मेंबर नहीं है वो एक्सेस कर सकता है? नो, नहीं कर सकता. इवन क्लास के मेंबर भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास. Non-member functions should not allowed. You have to read this statement carefully. Non-member functions should not allowed to access the private data members of the class. It is the restriction by the class in the C++ due to encapsulation and data hiding. कि जो भी मेंबर्स प्राइवेट है क्लास के, उनको क्लास के जो मेंबर नहीं है वो कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते. इट मींस वी कांट एक्सेस देम आउटसाइड द क्लास, वी कांट एक्सेस देम यूजिंग ऑब्जेक्ट इन मेन फंक्शन ऑल्सो. हम दोनों जगह उसको एक्सेस करने के लिए एबल नहीं है. सो इट विल बी द रेस्ट्रिक्शन फॉर द नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल मेंबर्स, है ना? तो next one is the in some situations, okay, sometimes we need to required to access them with the special consent, or we can say
है ना. कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार ये प्रॉपर्टीज है, ये अनएक्सेसिबल है, बट उसको कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं. जैसे मान लो किसी का भी मोबाइल टैप करना इलीगल है, बट साइबर सिक्योरिटी टीम कैन टैप योर मोबाइल, है ना. तो वो कुछ स्पेशल परमिशन कंडीशंस के अंदर कंपनीज उनको परमिशन देती हैं कि भाई आप इसको कर सकते हो, है ना. सो योर डेटा इज सिक्योर्ड, but in some situations we need to allow to access some functions. Okay, so what is mentioned here, we would like to access the private data members of the class by using non-member functions. यहां पे क्या कहा गया है कि नॉन मेंबर फंक्शन कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता क्लास के प्राइवेट मेंबर को. बट कुछ सिचुएशंस में हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि नॉन मेंबर फंक्शंस को डेटा, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना ही होता है ना. हम उसको रोक नहीं सकते. उस कंडीशन में हम उन फंक्शंस को एज ए फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे, है ना. देन these are able to access the property of classes. Okay, so in these situations in C++, we have to made a friend function. Okay, we need to made it, and we can say friend functions can access the private properties, or we can say the private data members of the class. So it will be the power of friend function. It is different from everything. फ्रेंड फंक्शन के अलावा कोई भी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता. ओनली द फ्रेंड फंक्शन is allowed to access the private property of the class. Or even friend function is not a part of, we can say, class. We just declare that in class, but we don't need to give the scope of the class. हमें स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली. इट इज जस्ट ए, वी कैन से द नॉन मेंबर ऑफ द क्लास. ये क्लास का मेंबर ही नहीं होगा. ओके, so we need to discuss the example, but before the example we need to discuss the syntax and some characteristics, or we can say some advantages of the friend function. What is the syntax here? Class syntax will be same. There will be the data members and member functions. In private section we have to define there some data members. In public member we have to define some member function. There is a function, you have to use any name for the function. You can use any return type for that particular function. You have to put the keyword friend in front of function name. It means it is a function that define anywhere in the program, not necessary it is defined in the class. It is friend of this particular class. यहाँ पे हमने ये इसलिए लिखा है कि इस क्लास को हमने बताया कि ये इस नेम का एक फंक्शन है, वो आपका फ्रेंड है. ओके, देन वी हैव टू डिफाइन द फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास. आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कोई स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर को यूज नहीं किया है. जस्ट रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम. If you want to make a function like int abc, you can make it anywhere outside the class. There is no need of you have to include the name of the class, or you have to include the scope of the class. कोई जरूरत नहीं है.
है ना। आप लोगों में से किसी ने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा भी था, लैब में पूछा था आई थिंक, कि सर अगर हम क्लास से बाहर फंक्शन बना दें डायरेक्टली तो क्या फर्क पड़ता है? देयर इज नो प्रॉब्लम, you can make the function but the function can't access the property of the class. but अगर आपने उस फंक्शन को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है क्लास के अंदर, then you can access the property of the class, private as well as public. All kind of things we have to access. Okay. So we need to know about some points, like you have to declare function with keyword friend in the class definition. Okay. And you can define it as a normal function in C++ outside the class, है ना, कहीं भी आप define कर सकते हो इसको. And then function definition is not require the keyword friend, यानी जहाँ पे आप function बनाओगे वहाँ पे आपको friend लिखने की जरूरत नहीं है ना, जैसे हमने यहाँ पे friend नहीं लिखा है. There is no need to include the keyword friend. There will be some characteristics. So all these characteristics are already we will discuss. We had discussed in previous slide. There will be like scope of friend function is not limited, है ना, कोई limitation नहीं है, उसको आप कहीं भी access कर सकते हो. There is no problem. यानी friend function को आप कहीं भी call कर सकते हो, in class, outside class, in main function, anywhere you want to, जहाँ पे भी आपको कॉल करना हो. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द स्कोप. ठीक है. देयर इज नो नीड टू कॉल द फ्रेंड फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट. मेन फंक्शन में आप सभी फंक्शंस को ऑब्जेक्ट से कॉल करते हो ना, इसको डायरेक्ट कॉल करोगे. देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. क्यों जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्लास, ये क्लास का मेंबर ही नहीं है. तो अगर आप ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो ये आपको एरर देगा. देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. You can call it directly. It cannot access the members directly. जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उनको ये एक्सेस तो कर सकता है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ये एक्सेस कर पाएगा, बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा. हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, और यूजिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट we can access the data members. Okay. So we need to object name, and we have to access data member with dot operator. Okay. Friend function can be declared either private or public part, है ना. आप यहाँ पे इसको पब्लिक भी रख सकते हो क्लास में, और प्राइवेट भी रख सकते हो, है ना. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके. एंड फ्रेंड फंक्शन हैज ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, है ना, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. आपको एक ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा. So we can see the example. There will be the example of class name with distance, and there will be a data member int meter. It is a private data member. Okay. And in public there will be a constructor, and the variable meter initialized with the value 0. And here the function defined as friend int add 5. ये फंक्शन का नेम है. int इसकी रिटर्न टाइप है, फ्रेंड इसका नेचर है. ठीक है. एंड डिस्टेंस हमने एक आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने क्लास का नेम यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होती है? क्लास का नेम होता है.
Okay, and class is closed here. Then now we need to define, we can say define the function. Just you have to write data type, return type, function name, and you have to get an object as an argument. That will be D. Okay. So you can call this private data members using the dot operator with the object. Okay. So D dot meter equal to meter plus 5. What is the value of meter at initially? 0. But here the value is increased by the 5. So the current value of variable data member meter will be 5. Return the value of D dot meter. And we have to return this 5 value. In main function, we have to declare an object. Okay. Why the object is declared here? Because of the we need to call the constructor. जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, मेमोरी में आपको स्पेस नहीं मिलेगा. बाकी इसकी रियल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें किसी को कॉल ही नहीं करना है यहाँ पे, है ना. बट ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है ना. बोथ आर डिफरेंट. that d or that d is not same. Okay, so you have to call this function. Okay, and pass the we can say d as a argument. Okay, so it will be the capital D, I think, है ना. एज ए आर्ग्यूमेंट आपको पास करना. जो डी के पास वैल्यू होगी दैट मीन्स डी के पास जो जीरो होगी वो पहले मीटर के अंदर पास की जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका यही. वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस using the demonstration. So the same example here, there will be the distance, name of the class, and the data member will be int meter, and there will be an object created at initial because of the constructor is called whenever the object is created ना. मेमोरी में हमें स्पेस मिल गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और कंस्ट्रक्टर कॉल होते यहाँ पे वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी. देन वी नीड टू कॉल द फंक्शन ऐड. दैट विल बी आवर फंक्शन, है ना. ये एक फ्रेंड फंक्शन है जो हमने बनाया, ये यहाँ पे हमने कॉल किया. सो देयर विल बी ए एरर. व्हाट इज द एरर? int distance meter is private int meter. अगर आप इसको ऐसे कॉल करोगे तो ये वाली एरर देगा. देखो अभी तक हमने फ्रेंड फंक्शन डिफाइन नहीं किया क्लास में, इसलिए एरर दे रहा है. क्या एरर दे रहा है? int distance scope meter is private int meter, कि ये एक प्राइवेट डेटा मेंबर है डिस्टेंस क्लास का, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. दैट इज द एरर. अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं एज ए फ्रेंड. हमने यहाँ पे एज ए फ्रेंड इसको डिफाइन कर दिया. अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, वी नीड टू execute, then it will be called and the value is 5 is here. Okay, so the result is 5. Okay, so that will be the difference. Friend function accessing members of different classes. ठीक है, एक क्लास के यहाँ पे मेंबर्स हमने एक्सेस किए. क्या हम डिफरेंट क्लासेस के मेंबर भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन? तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, यू हैव टू रीड देम. सो आफ्टर रीडिंग these both statements, you already understand that you can use a friend function to access more than one classes.
But restriction is here that you have to define that particular function in both of the classes as friend function. दोनों classes में आपको define करना पड़ेगा. And you have to tag the argument for both classes. हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ना एज आर्ग्यूमेंट, तो आपको दोनों क्लासेस के लिए आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा. दैट विल बी द प्रॉब्लम. Okay, so you can see the multiple classes here. The class A is here. First you have to declare the class B, then you have to define the class A here. Okay, then there will be the friend function. Okay, then in class B there will be the friend function. Name is same, add. Okay, and data types will be used for both because of हमें दोनों के ऑब्जेक्ट यूज करने पड़ेंगे. So you have to use A and B both data types of the for the both classes. Okay, so we need to declare two objects, one for the class A and another for the class B, and then we can access the data of both objects. So we need to add them. Num is the data member of class A and num2 is the data member of the class B. So we need to access num1 with object 1 and we need to access the num2 with the object 2 and add them and return them. Okay. So what we have to do in main function, we have to declare objects for both classes. We have to read the function get data because of get data is here for the class A and get data is here for the class B. In num1 we can say there will be the value 5 given by the user and the value 4 is given by the user in the num2. Then we need to call the function add. So where we have to pass the object 1 and pass the object 2 because of in ऑब्जेक्ट 1 के पास num1 की वैल्यू है. यहाँ पे मेमोरी के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ob1 जिसके पास num1 की वैल्यू है, इट मींस वैल्यू इज 5 एंड ob2 के पास num2 की वैल्यू है, दैट विल बी 4. So at that in function we have to add sorry, we have to add both. Okay, then 4 plus 5 will be written by this function and we get the result is 9. So you can use a single function that can be defined in multiple classes as friend function to access the private properties of multiple classes. Okay, then we will move on the friend class. What is the friend class? जैसे हमने फ्रेंड फंक्शन को अलाउ किया है एक क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए, वैसे ही हम फ्रेंड क्लासेस में भी एक क्लास को अलाउ करते हैं दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए. ओके, इट इज जस्ट लाइक फ्रेंड फंक्शन, जस्ट लाइक फ्रेंड फंक्शन बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी वही फैसिलिटी दी जा रही है जो फ्रेंड फंक्शन को फैसिलिटी दी जा रही थी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस syntax we have to discuss. What is the syntax here? There is a class declared with name 2 and one class defined as class name 1. There will be some private members and
friend class num2, it is defined in the class 1 as the friend, है ना. फ्रेंड क्लास नेम जो सेकंड क्लास है नेम 2, उसको फर्स्ट क्लास का फ्रेंड बना दिया गया है. ठीक है. बट देयर विल बी ए वन थिंग वी नीड टू नो दैट कि क्लास 1 क्लास 2 के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है या क्लास 2 क्लास 1 के मेंबर को एक्सेस कर सकती है. That is the issue in the friend classes. We have to know about this because of it is a we can say it can be a, it can create a confusion. So you have to read this statement. According to this syntax, we can say that all member functions of class 2, इट मीन्स जिसको हमने फ्रेंड बनाया है, हमने यहाँ पे किसको फ्रेंड बनाया, क्लास नेम 2 को फ्रेंड बनाया, विल बी द फ्रेंड फंक्शंस ऑफ क्लास नेम 1. यानी इस क्लास के सभी फंक्शंस फ्रेंड फंक्शन होंगे क्लास 1 के लिए. इट मीन्स क्लास 2 जो है वो क्लास 1 के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, बट क्लास 1 क्लास 2 के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती. इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है. यू कैन रीड इट इन दिस सेकंड स्टेटमेंट. सो you need to remember that the class second that will be defined as the friend of class 1, it can access all properties of class 1, but class 1 can't access anything from the class 2. जो फ्रेंड बनेगा वो एक्सेस कर सकता है, जिसका फ्रेंड बनेगा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा. ध्यान रखना, यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन है. मैं इसमें आपको समझा देता हूँ, है ना. एट द प्लेस ऑफ this friend function, we need to define the friend as the class B. Okay, class B. क्लास बी को हमने यहाँ पे एज ए फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया. इट मीन्स क्लास बी कैन एक्सेस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास E. Okay, so we can access from here. I think I will put the statement here in this get data, or we can make a new function here. Okay, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और क्लास को यहाँ पे बंद कर देता हूँ. इस फंक्शन को हम अंदर ले लेते हैं. That will be the add function in class B. It can access num1 plus num2. There is no need of these objects. Okay. So the num1 is part of class A, but you can access it in class B because of the class A have the definition of class B as friend. Okay, that's why you can access the members of the class A. Okay, आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे. The next one is the I think our time is also running out. There will be 10 minutes remaining. We need to finish this topic in 10 minutes using this pointer. It is a we can say special kind of pointer. It is a pointer that have some special abilities, we can say.
It is a pointer always used with the this keyword. ठीक है, और मेनली ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, ये करंट पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी करंट आपका ऑब्जेक्ट होगा क्लास का, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द दिस पॉइंटर। ओके, देयर can use for this can use for the hidden argument passing, non-static member function calls, or we can say call the local variables or initialize the local variables. And these all things we have to uh, use by the using this pointer. आप फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट जब आप पास करते हो किसी वैल्यू को या ऑब्जेक्ट को, देन यू कैन यूज द दिस पॉइंटर ऑल विद ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, एंड यू कैन यूज this to initialize, or you can call the any data member that are non static in the class, है ना, जो static members नहीं है, ठीक है, you can call them, you can initialize variables, we can use the this pointer with all these things. So mainly क्या क्या देखो हम this pointer की सहायता से करते हैं. It is a pointer holds the memory address. Pointer always memory address hold करते हैं, ये लोग बात आप लोग जानते हो. But here it holds the memory address for the current object. है ना? It is used for the object, not for basic things. It is the difference between simple pointer and the this pointer. And it is also used to represent the address of an object inside a data member function. जैसे आपने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन के अंदर देखा ना, देखिए देखो यहाँ पे ये डी जो है वो इनसाइड डेटा मेंबर आप यूज कर रहे हो, तो विद डी यू कैन यूज द दिस पॉइंटर. आप यहाँ पे डी की जगह क्या लिख सकते हो, जस्ट यू हैव टू राइट दिस एंड योर वेरिएबल मीटर. It is also allowed. Okay. Then what is the next? It is a implicit parameter. We can say implicit. We can say the internal member of the any function. You can use it as argument, or you can use it as a data member accessing. What is the syntax? This, then you have to use the arrow sign, and then you have to use the member identifier. And it is just similar to, I already told you that. You can use it as defined syntax. Here, friend function do not have this pointer. You have to focus on this statement, because friend function not member of the class. आप फ्रेंड फंक्शन के साथ इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्लास का मेंबर नहीं होता है. केवल क्लास के मेंबर ही उसको यूज कर सकते हैं. इट मीन्स इफ it is a member of the class, it is defined just like this, and it is defined just with the scope. I think it is like int class name distance. Okay, अगर ये ऐसे बना हुआ होता, scope resolution and then function name add 5, then you can access it. Okay, then you can declare here this.
and you can use with the data members. And you have to know another thing also, that this pointer is not available in static members. If there is variable declared with the static storage class, then you can't access it with the this pointer. You have to remember this also. Okay. And some other things like the main usage of the this keyword. What is the usage? You have to read all these three statements one by one. It can be used to pass current object. I already told you that ये current object को lead करती है, represent करती है. So you can pass the current object as parameter. ठीक है, किसी भी करंट ऑब्जेक्ट को आप पैरामीटर के रूप में यहाँ पे पास कर सकते हो. इट विल बी द characteristics of this pointer. It is also used to refer current class instance variable. Okay, you can refer any variable of that particular class. In this, you want to use this pointer. And next one, it can be used to declare indexers. So there we don't talk about the indexers because of it is a very different topic and very different use. It is not in our syllabus. So it is just you have to, if you want to know about that, then you have to refer the book like Balaguru Swami or let us say plus of Yaswant Kanetkar, or you can prefer some website tutorials for this extra knowledge. Okay, so we need to discuss this pointer with example. Here the class with name test. There will be a data member X and there will be a function set X and a argument passed as int X. Okay, so there will be pointer used by us this X equal to X. It means ये वाला जो X है वो ये वाला X है और ये वाला X है वो ये वाला X है. That's why we need to put this pointer here. हमें अगर इस टाइप की कुछ डिफरेंशिएट करना हो then we need to put this pointer. You can read the comment also that this pointer is used to retrieve the objects X hidden by the local variable X. यहाँ पे local variable इस function के अंदर ये वाला, इसने इस X को hide कर दिया. So we need to come with this pointer to access this member by using this keyword. Okay, that will be the need of this pointer. And whenever you print then you can simply put the X because of यहाँ पे कोई local variable X name का नहीं है. अगर यहाँ पे भी local variable कोई X name का हो जाता then we have to print this arrow X. That will be the simple use of this pointer here in reference of we can say data. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. यहाँ पे ये दिस पॉइंटर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस क्लास के लिए. What is in main function? We need to declare a object and here will be a variable X, give the value 20,
वैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप x को इन 20 वैल्यू से इनिशियलाइज करो. यू कैन गेट वैल्यू फ्रॉम द यूजर ऑल्सो. और अगर कांस्टेंट ही देना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 20 लिख सकते हो. ओके, whenever you call the set x. और अगर आप वेरिएबल लेना चाहते हो, then you can put the constant value and you can put the value from the get value from the user also. Okay, so that there will be no change due to this pointer. यहाँ पे कोई change नहीं होगा, ध्यान रखना. It will be the same. Change is only in the class because of this pointer is always used in the class, not outside the class, because of it is always used with the member of the class, है ना. तो इसलिए ये हमेशा क्लास में यूज होगा. So it will be the this pointer. So today's lecture will be finished here.